expansion of sine n theta, cos n theta in powers of sine theta and cos theta. This is the concept we have to study today. So to obtain these expansions, we will write cos theta in two ways. एक तो आपको पता है डी मोवियस थ्योरम से हम लोग करते हैं, पहला है बाय डी मोवियस थ्योरम। दो तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, डी मोवियस थ्योरम। बाय डी मोवियस थ्योरम, व्हाट इज cos of theta plus I into sin of theta raised to n, स्टडी किया है हमने लास्ट लेक्चर में। दिस इज cos of n theta plus I into sin n theta. This is by one way you can express, this is by one way to express the concept of or the equation cos theta plus I sin theta raised to n. Similarly, by binomial theorem, we can also expand this bracket by binomial theorem. क्या होगा? This is cos of theta plus I into sin of theta raised to n is equal to, ये आपने किया है, this is how you will do, nc0 cos raised to n theta into sin raised to theta raised to 0, right? Plus nc1 cos raised to n minus 1 theta into I into sin theta raised to 1, right? Next is again nc2 cos raised to n minus 2 theta I sin, एक मिनट है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूं, प्लस साइन nc2 cos raised to n minus 2 theta I into sin theta raised to 2 प्लस प्लस सो ऑन, ये करते रहना है आपको ncn तक, राइट? ना इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं nc0, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके प्लस में आ जाएंगे, कुछ रियल में आ जाएंगे और कुछ इमेजिनरी में आ जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पे ये टर्म रियल है, ये टर्म इमेजिनरी है बिकॉज यहाँ पे आई है, राइट? यहाँ पे क्या होगा कि आई स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो -1 बन जाएगा तो यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, तो ये टर्म जो है आपकी रियल बन जाएगी, राइट? सो उनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, combining real part in one bracket and imaginary part in other bracket. This will be nc0 cos raised to n theta plus, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस nc2 cos raised to n minus 2 theta into sin raised to 2 theta sin square theta, right? ये हो जाएगी आपकी पहली टर्म, सेकेंड टर्म, and so on. This is your real part plus I and then your imaginary part. Imaginary part में ये टर्म एक आएगी जिसमें I नहीं लिखना होगा आपको क्योंकि आपने I कॉमन लिया है. So this will be nc1 cos raised to n minus 1 theta into sin of theta, right? Plus plus so on, बाकी terms. Call this equation number 2. This is cos of theta plus I into sin of theta raised to n, right? So if you observe the equation 1 and 2, then left hand side is same, so right hand side must be same. Right hand side are two complex numbers and two complex number are equal when real part of first number is equal to real part of other number, second number, and imaginary part is equal to imaginary part of first is equal to imaginary part of second, right? And therefore equating from 1 and 2, equating real and imaginary part, equating real and imaginary part from 1 and 2, from 1 and 2, what will happen? I will continue on the next page. क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे होगा cos of n theta is equal to nc0 cos raised to n theta, क्योंकि यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है।
यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल इज इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी, एंड देयरफॉर वी हैव, पहली टर्म आपकी बन जाएगी cos ऑफ n थीटा के लिए इक्वेशन मिलेगी आपको cos n थीटा, दैट विल बी नथिंग बट nc0 cos raised to n theta minus nc2 cos raised to n minus 2 theta into sin square theta plus so on, and sin of n theta you will get sin n theta, इसके लिए भी आपको एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इक्वेशन इज nc1 cos raised to n minus 1 into theta sin of theta minus nc3 cos raised to n minus 3 theta sin cube theta, and so on. So these are the two equations or two concepts or say methods for expressing sin n theta and cos n theta in terms of cos and sin, right? So this will be this is how you have to express sin n theta and cos n theta in terms of sin and cos, right?